Hello, everybody. Good morning. Sorry for late. I Hello, hello Vikas. Good morning. was. Vikas. Good morning, everyone. Hi, Good Nikhil. morning. Good morning, Hello sir. Nikhil. Hello Nikhil. Good morning, Thanks for sir. thanks Good for morning. joining everyone on this Saturday. I know it's like an not the best thing to do on Saturday, Yeah. but So so all right. So today we are gathered here to talk about the options that we have towards like making our career in software development. So people often struggle and not able to decide like what to go for, like JavaScript or Python or Java, which language is better. I mean, or or is like is software developer job only meant for CSE guys, or anyone who are not CSE can do it. So there are several questions that people struggled during their graduation times, and also some people even start struggling with these questions before that during their school days also. So we will tackle all of such issues one by one. So let's find out like how to start as your career as a developer, what things you need as a first thing. um to be able to get your first um job as a software developer, the requirement, these three are the basic requirement that you need to fulfill. One is having a degree in computer science. Second is an internship, and third is a technical skill set. So by the time you complete your education and you you target to get into a job, make sure you have all these three. The first one is negotiable. If you don't have a degree in computer science, uh, it will still work at some places. That one is negotiable, but the second and third one is not. So to be able to get into your first job after completion of your degree, um, you need to have an internship and a technical skill set. Okay, so these are the mostly accepted standard in the company. There is no fixed rule as such written anywhere in the rule books. But yeah, these are the generally acceptable criteria: a degree in computer science, an internship certificate, an internship anywhere in the software company, and a technical skill set. And the last part, internship. So you know all of most of the things that you are familiar with. A degree in computer science is a BTech degree or BCA degree or MCA degree. Okay, so these are the helpful degrees. Beyond that, let's talk about the internship. So to be able to get your first internship, make sure that you have got a good number of coding projects in your profile. Coding projects are required when you apply job as a fresher. Your recruiters, your interviewers do look for the projects that you have done so far. It doesn't have to be a professional or client project. It could be any dummy project that you have done by yourself to demonstrate your understanding of the technology, to demonstrate your understanding and demonstrate your abilities to perform. So you can make any dummy project by yourself. Normally, you also do projects as part of your BTech curriculum if you are coming from a BTech background. So that those projects are also helpful. Not one. Try to have like a three or four different projects on your GitHub profile from different domain, like not from e-commerce only. It could be one could be a e-commerce project, other could be a job market project, the other could be a um, a chat bot project. So diversify the projects that you're doing and make three or four different projects to be able to succeed as a
um, to succeed in getting your first internship. Yeah. And upload all of your projects on the GitHub profile and maintain it. Once you are ready with the first thing, apply for apply for interviews. And where do you apply for that? There are different ways of doing it. One is that there are intern specific job portals. Internship specific job portals are also there, where you there are only internship information internship related openings are posted. Okay, one of them I know is internshala.com. So there you can only find the companies which needs interns, and you can apply there. um Beyond that, you can also apply through the regular job portals, but make sure you are applied only to the relevant profile. Uh, if the employer is not asking for zero experience or internship people, then don't apply for it. That can have a negative impact on your job prospect. Apart from that, you also need to prepare yourself for technical interviews. So there are several skills, there are several round of technical interviews that companies take. Um, there are code challenges that are there in the interview. So prepare yourself for the code challenges, practice multiple code challenges. On the internet, you will find like several code challenges: easy level, medium level, difficult level. So start yourself from a easy level code challenge. If you feel confident that you are able to do all of them, then move for the medium level, and then finally for the difficult level. uh, Next is to leverage your network. If you know people who are in good position in companies, so don't hesitate to reach them out. Get their contact number, talk to them, find out like which season their company starts internship, and what are the requirements, what do they look for in the candidates. So this way you can leverage your network, and the internship starts, you can get the preparation tips beforehand. So if the internship starts in the particular company at in March, and you get the interview tips in January, then you have got 2 months to prepare for that, right? So that way you can leverage your network. So don't hesitate, reach out to every people you know who are in this field, and get tips from them. Start preparing. Third, sixth, and last, network. Update your LinkedIn profile and resume. Many job applicants do not have their updated resume. Some or the other information is missing, which could be crucial for their job application. So take a look at your resume at least once in a month, and then then update the information which are present there. Same thing for your LinkedIn profile. Same thing is for LinkedIn profile and job portals. Keep your profiles updated, and anything you find it gets outdated or has changed, please update it. So all these information will help you get through will help you get your first internship. And once you are into the first internship, once you have the internship, your next job is going to be easy find. It won't be a struggle beyond that. Okay, so we talked about internship, and the other thing that you need to build yourself for is technical skill set. Cool. There are there are many questions that are going on people's mind around technical skill set. Uh, what language is the best? JavaScript, Python, Java, or C sharp? You have got like a dozens of language in the market. Okay, so as per the uses, JavaScript is the clear winner. So whichever language you choose, JavaScript is not something you can ignore. Even if you are a Java developer or Ruby on Rails developer, Python developer, JavaScript is something that you have to learn.
Okay. um this is like this information is easily available on internet. Like this language is required by all developers, so you must prepare for this language called JavaScript. Hmm? Beyond that, also prepare yourself for the front end technologies. So here you get choice. There are several front end technologies. You can choose one of them. You can choose out of Angular, React, or Vue. So all of these front-end technologies are purely dependent on JavaScript. So the first point, JavaScript language are going to be useful here. Okay. Um, Beyond that, backend technologies. Now in backend technology, JavaScript is not a must language, but that JavaScript language also works here in backend technologies. So there are several backend technologies. If you choose your language as Python, then your backend technology would be Python, Django, Flask. If you choose your language as JavaScript, then your backend technology should be Express.js, Node.js, that way. Okay. Uh, the fourth important skill is database. Database, you should target learning one database from NoSQL family, which is MongoDB could be your choice, and another database from a SQL family. So there are two different families, two different categories of database. One is SQL database and other are NoSQL database. Learn one from each. That should be sufficient. With the first 4 point prepared, you should feel confident uh, to get, I mean, appear for the interviews and crack interviews. Okay. Optionally, because there is a tough competition in the market, so you also want to like stand out from in the competition, then you also prepare for the fifth and sixth point. Fifth is a version control software called Git. Git helps you uh, Git helps you to keep track of the multiple versions of your code and also save the code on your cloud. So Git is an important skill that everybody has to learn one day. Maybe if you don't learn it at the entry level or in the beginning, you will eventually learn it. And last is AWS. Mm, so this AWS is a cloud solution, and there are other cloud providers also, but AWS is a clear winner. Like there is no competition for AWS in cloud services. Even the government sector has now started using AWS. So such is the trust on AWS people have now. You use AWS cloud services to deploy your software. You can run your code using their serverless stack and also store your files and everything. So with technical skills um, ready, internship done, and a degree in technology, computer science, you are fit for you are applying for jobs and fly high in your career. There is no limit in this career. The one thing I can guarantee, and there is no point you will say, "Oh, I have achieved my growth." No, your growth keeps. I mean, there is no limit. Sky is the limit here. So as long as you are upskilling yourself, as long as you are keep learning the new technology, um, you can keep growing in this field. So that's the reason, like this IT sector, this industry attracts so many talents every year, and so many fresh graduates enter this field every year. Even people from diverse background, people from mechanical, people from aeronautical engineering come to civil. So people from all kind of diverse background enter into this industry. Um, because of this reason. So, as I told you in the beginning, the first thing, which is a degree in computer science, is negotiable but still important. Okay, with this, I have concluded my introduction. Next, I'll
let you ask the questions. Um, Nikhil, welcome. Do you That was have a a good question? that was a good introduction, Vikas. Thank you so much for that. Thank you, Vikas. Welcome, Hi, Nikhil. Mordhawaj. Welcome, Hi. Jay. You're on mute if you're talking. Nikhil, you're on mute. Hello. Can I ask in Hindi, sir? I'm not Yeah. confident. सर मुझे पूछना है, मैं बीएससी आईटी से अपने ग्रेजुएशन कर रहा हूँ. Right. हेलो. ठीक है, Okay. बताइए. मैं अभी बीएससी आईटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ. मैं अभी सेकेंड सेम में हूँ और मैंने कुछ प्रोजेक्ट मैंने अपने फ्रंट एंड पे कंट्रोल किया हूँ एचटीएमएल सीएसएस और कुछ जावास्क्रिप्ट से. मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं. और सर मुझे इन फ्यूचर इंटर्नशिप का चांसेस मिल सकते हैं अगर मैं आगे अगर थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में अप्लाई करूँ तो. Yes, yes. Please, the first answer to your first question is yes. There is always an option and for internship with us. We open internship in December every year. So by the time you can use the time to prepare yourself. But I saw, sir, in your requirement is BTech and BE. I'm eligible or not? You are doing BCIT, right? No, BSc IT, Bachelor of Science in Information Technology. BSCIT. Where did you find that requirement? BTech and BE? In your internship role, sir. In our In, internship advertisement. yes, sir. Okay. So you can still apply for it, and we will consider your candidature. Okay. As I initially told in this slide, no, in the beginning, degree in computer science, degree in computer science. So BCAIT or BSCIT is a degree in computer science. Okay, sir. Okay. Is that not Yes. true, One more Nikhil? question, sir. So डाटाबेस पे मुझे कौन से अभी करंटली मतलब लैंग्वेज एक्टिव चल रहे हैं जैसे. डेटाबेस में इजी और इजी में इजी भी है और काफी यूजफुल भी होगा मोंगोडीबी. सर थैंक यू सर. ठीक है. निखिल, डोंट कंसंट्रेट और लैंग्वेज. तुमको ऐसा कमांड टर्मिनल में जाके करने नहीं बोला जाएगा. तो ये अभी सिर्फ मोंगोडीबी या पोस्टग्रेस ये कैसे यूज करते हैं ये काम, मतलब ये सीख लिए तो चलेगा. हमको वहाँ पे लैंग्वेज एसक्यूएल सीखने की जरूरत है नहीं, उतना रिक्वायरमेंट है नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हु यूज मोंगोडीबी और पोस्टग्रेस एसक्यूएल, they don't put any command of SQL, राइट. सो तुमको एसक्यूएल लैंग्वेज सीखने की अभी जरूरत है नहीं. बट हाउ टू यूज दैट, पोस्टग्रेस कैसे यूज करना है अपने जो भी प्रोजेक्ट है बैकएंड में, और मोंगोडीबी कैसे यूज करना है, वो अभी इम्पोर्टेंट है, राइट. ओके सर. Yeah. So I can add a little more to more towards point. कोडिंग में database query डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं हम लोग. हम लोग OKR या ODM नाम का एक टूल यूज करते हैं जो कि जिससे कि क्वेरी database का क्वेरी बनता है. तो इसलिए आपको क्वेरी एकदम सारे याद होने चाहिए. आपको सारे क्वेरी याद करने हैं ऐसा कुछ नहीं है. Just you should know कि how they execute and how they work. Okay, so a database for database, I would suggest go for MongoDB. One database, focus on it, learn it nicely. Okay, a 50% command on database is sufficient at beginner level, not 100% command. Okay, so don't go for the complex ones. Joins lagana ye sab not a requirement in as a beginner level. Huh? After 1 year experience, those will be required. But as a beginner level, you should be able to create a new database entry, insert a record, fetch a record, find ये सब चीज आना चाहिए.
So to keep your path straight and simple, learn JavaScript, front end technology, HTML, CSS, JavaScript, and React.js. These four things. Backend technologies, Node and Express. Databases में MongoDB. Prepare for these items. You should be sufficient. Okay. Yes. And Yes, as sir. I told you earlier, if you want to stand out in the competition, then also go and prepare for the 5th and 6th. Okay, sir. I have also uploaded projects in GitHub profile. I appreciate Small that. project. Yeah. That's a good one. Currently in 2nd semester, right? Yes, sir. Second semester in Dr. CVR University. Now end of I the get August it. exam. Okay, you just appeared for your exams. Okay, sir. Perfect. So one more question. In a test, when I applying for an internship, I got it for sorry. जो टेस्ट होते हैं मतलब उसमें डीएसए के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे रिक्वायर्ड है नहीं, हमारे पास नहीं है। वो एरर नॉन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे डीएसए के थोड़े बहुत। इन केस इफ आई एम टेकिंग इंटरव्यू तो एरर रिलेटेड क्वेश्चन एटलीस्ट आने चाहिए। ठीक है। Yeah, right. So I was coming to that. I was just sending that array related question sufficient होंगे preparation में, हाँ। Okay, वो भी डाटा स्ट्रक्चर के ही डाटा स्ट्रक्चर में काउंट होता है। यस या सर यस Array एरे related like 2D या arrays, 1D array related questions होंगे, हाँ। तो मतलब not डेटा स्ट्रक्चर में अभी सिर्फ एरे और सेट ये दोनों ही अभी मतलब यू कैन डू दिस टू ओनली ठीक है, ऑफ द डाटा हाँ। स्ट्रक्चर्स। आपको लिंक लिस्ट नहीं पूछा जाएगा, इतना तो पक्का है। और डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये नहीं। तो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, एरे, स्टैक, क्यू, ये सब आप प्रिपेयर करना। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन सर जैसे मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ मैं एलिजिबल कब हो जाऊंगा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए क्योंकि फाइन। क्योंकि सर मैंने कुछ फ्री इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था वो एज ए मुझे फेक लग रहा है पता नहीं उसमें कुछ कोड क्लोज कोड अल्फा करके कुछ आते हैं वो फ्री इंटर्नशिप करवाते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं बनवाते हैं 1 मंथ का तो वो सर क्या है फेक है या रियल है सो you can still go for online trainings। अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे और आपको प्रोजेक्ट बनवाएंगे, you can still go for that, okay? So that's a online training is a different thing. People teach you Python, or they will teach you a PHP, or at the end of the course they will also help you make a project. That is also यस helpful. So I'm not saying not that's but that's different from internship. They don't give you a exposure to real-time project. Mm. So when I say internship, that in industrial context, it means a real-time project with real exposure to the industrial project. So this is different one, and for this internship, it's normally in the industry, people the companies allow you to do internship if you are in the last semester, final semester. ओके सर That is for your course, it will be 6th semester. ओके सर Okay. The reason is that like it's convenient for the industries to finish your internship and then absorb you into employment soon after that. यस Okay. यस Karan सर has posted अगर his. Go ahead. सर Go मैंने ahead, कुछ Nikhil. प्रोजेक्ट्स मैंने कुछ बनाए जैसे अगर कंपनी में मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिनिमम अगर 3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए वो प्रोजेक्ट्स किससे रिलेटेड मींस फर्स्ट तो ई कॉमर्स मतलब इस टाइप से कुछ सर मुझे कुछ हिंट्स मिलेंगे कैसे हाँ, हाँ। प्रोजेक्ट्स मैं अपने आप डाइवर्सिफाई करो प्रोजेक्ट, एक जैसा मत बनाओ। ओके। अगर आप मल्टीपल, एक तो पहले मल्टीपल 4 बनाओ, 4 से कम तो बनाओ ही मत।
तो एक आप ई कॉमर्स बनाओ, दूसरा आप चैट बॉट बना के रखो। हाँ, यस सर। और इस तरीके से एक जगह पे आप वीडियो स्ट्रीमिंग बना लो, नेटफ्लिक्स जैसा कुछ, ई कॉमर्स हुआ कुछ अमेजोन जैसा, एक चैट बॉट बनाओ। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई करो, जिससे जिससे आगे वाले को दिखे कि इसको इसने अलग अलग चीजें ट्राई करी है। हाँ, ओके सर। डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग लैंग्वेज ट्राई करने लग जाओ, वो आपको फिर आपको डेविएट करेगा। चार पांच लैंग्वेज कोई बेनिफिशियल नहीं होता है, लैंग्वेज एक ही सीखो, टेक्नोलॉजी स्टैक एक ही पे फोकस करो, मगर डोमेन अलग अलग ट्राई करना है, ये मेरा कहना ओके था। सर। Murdhaj, do you have a suggestion for this? Uh, yeah, because by you are correct. Means your portfolio must be diversified, right? Uh, but- and if you go one step ahead, you should not only put your repo in the GitHub, you should also try to make your own blog, your own website. There you can push your portfolio, right? I have seen many candidates in their resume, they had mentioned that they have a separate blog, a separate website for them. So it's impressive. So you can go ahead. Not only Mm, from GitHub, you can push all your repos inside your in your website. yeah. And yeah, the question is not only two or three projects, right? Means the projects might be it should be diversified. Means from different sections like marketplace, uh, streaming. For example, there's YouTube, and there are some other website where there are videos, right, of different categories. So that should be one kind of uh, project in your portfolio. And you can do with social networking sites, right? For example, uh, a clone of Insta, clone of FB, etc. Any other questions? नो सर। Karan, you were asking questions that for system design, is Java is efficient. So means where you will try to implement Java. In front end, I have not seen any Java related front end. So yeah, for backend Java Spring Boot, yeah, it is efficient in the case it is powerful, right? Means I cannot say it is efficient. It will depend on your for example, your engineers, right? So for most of the time you will get, for example, you have a company, for example, I have a company, right? So I will go with Node.js. I will see in my company the engineers are, means from which stream, from which kind of backend the engineers are, right? So it also depends on multiple factors. So yeah, Java is efficient. Means Java is with the help of Java Spring Boot. The project will be efficient, but it will be more memory consuming, right? And the space will be more. Yeah, I also want to add here, Karan's question is is system design in system design, Java is efficient or not? It So is typically first, so. I would like to highlight like what system design is. System design is just a concept, and it's not an implementation. Implementation starts later. So in design, you just need to be you need design is just a concept, and you don't need a language for doing the system design. So once system is designed, as a beginner level engineer, you don't have to do the system design. As the beginner level, you would only be doing the coding. So somebody else will, somebody senior will, someone in the senior, someone who is your senior will do this system design for you, or sometimes client provides
this design. So all you will do is a coding and implementation. Java is a like a very efficient and very robust language, very mature language also in backend technology. Yeah, and system design actually, language is not a factor. It's not, there is no use of it. Does this answer your question, Karan? Okay, thanks for confirming. Uh, okay, so Nikhil, you have to ask any further questions from Vikas bhai. No, sir. So, सर वन मोर, मैंने बीसीआईटी करा है। मुझे मुझे अपने आप को भीड़ से मतलब एक ग्रुप से अलग दिखाने के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूडेड मैं अपने रेज्यूम में क्या कर सकता हूँ? एक तो प्रोजेक्ट्स हो गए, कुछ मैं ये पॉइंट नंबर 4 तक तो मैंने कहा कि मैंडेटरी है, 5 और 6 एक्स्ट्रा है। आप ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी चीजें प्रिपेयर करो, गिट और एडब्ल्यूएस। हाँ, इसके अलावा आप अपने रिज्यूमो को पीडीएफ फॉर्मेट में भेजने के अलावा आप अपने पोर्टफोलियो का एक वेबसाइट रख सकते हो, जिसमें आप अपना रिज्यूमे की तरह उस पर एक्सपीरियंस, एजुकेशन, पोर्टफोलियो वेबसाइट में सारे चीजें डाल सकते हो। आप जॉब अप्लाई करते वक्त रिज्यूमे आप अपना इंट्रोडक्शन का एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, उसका लिंक वीडियो अपलोड कर सकते हो गूगल ड्राइव पे, यूट्यूब पे, और उसका एक लिंक भेज सकते हो आगे इंटरव्यूअर को। सो ये चीजें होंगी जो इंटरव्यूअर को मतलब रिक्रूटर को एक बार नजर में आएगी। ओ ये निखिल, ये वही कैंडिडेट है जो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा था। हाँ, काइंड ऑफ ये कुछ नई चीजें आप ट्राई कर सकते हो बियॉन्ड दैट। हाँ, जॉब अप्लाई करने के बाद आप इंस्टेंटली उस कंपनी के जो रिक्रूटर्स हैं, उस कंपनी के जो हेड्स हैं, उनको उनको लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के आप बता सकते हो कि या मैंने अब जॉब अप्लाई किया है, एंड आई थिंक कि देयर आर लाइक 100 पीपल अप्लाइंग फॉर इट, माई एप्लीकेशन माइट go unnoticed, so I thought I want to connect with you and make you aware that I also have just applied for it. Okay, so that catches the attention of the recruiter. सो दे नो कि ये वही कैंडिडेट है जो अपना वीडियो इंट्रोडक्शन भेजा था, ये वही कैंडिडेट है जो मुझे लिंक्डइन पे कनेक्शन भेजा था, मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज भेजा था। सो you will always be in their brain, so your resume will not be ignored. हाँ, but still your resume going to next level is purely depends on your merit. Does this answer your question, Nikhil? Yes, sir. Can I edit, sir, in a resume code shapes, stars and hacker are the stars? You can. Okay, sir. I could not get your question. एक बार फिर से कहोगे? जैसे कोड शेप और हैकर अर्थ में जो स्टार्स होते हैं ना, इतने रैंक के स्टार्स कोरर्स हैं, तो उसको हम रिज्यूम कर में सकते हो ऐड कर। आपने जो भी कंपटीशन वेबसाइट पे जो भी स्कोर किया है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो अपने रिज्यूमे में, मेंशन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो। हैकर अर्थ, हैकर मून, सारे। और वो अपने अवार्ड्स, अगर आपने कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, कोई अवार्ड्स है, कोई सर्टिफिकेट है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। तो बिगनर लेवल ये सारी चीजें आपका जो रिक्रूटर है वो सारी चीजें देखता है, तो उसके बेसिस पे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता है। थैंक यू, सर।
करण, will you elaborate a little? एक बार माइक अनम्यूट करके थोड़ा बताओ कि क्या सीख रहे हो अभी आप सिस्टम डिजाइन यूजिंग जावा. Maybe like I'm not able to understand what your question is. Yeah. आप क्या सीख रहे हो सिस्टम डिजाइन यूजिंग जावा, क्या होता है? All right, no problem. You can type your question if you have any problem at your end. Okay. So Nikhil, uh, I want to go with you. For example, you're working with front end, right? So which kind of tech stacks you are using? Just beginnings, HTML, CSS, and JavaScripts, and some concepts are just I'm starting in React.js. Studying Okay. Okay. So you have working experience of one or two projects, I guess. two projects. Yeah. So the all projects are completed. Means, for example, so you might have designed it with you had designed with only CSS or uh, any other, for example, Tailwind as CSS. Only CSS, only CSS. Not using Uh, Bootstrap and Tailwind CSS. yeah. So you can add, for example, you are in learning period, right? Means as you had mentioned, you have only experience in two projects. So as you grow, as you learn, so try enhancing this with other kind of tech stacks in front end. For example, first you are learning React, right? So but React is only a library. It is not a complete framework, right? Also in React, for example, now it's good. For example, it depends on the choice why you have selected React. For example, I have a company and I want to make React project for only my company purpose, right? I don't want to do its SEO, any search engine optimization. So in that case, React will be a not good. React will be not a good choice, right? You have to uh, go with HTML, normal HTML, CSS, or because in search engine optimization, all HTML elements from the React will be hindered. It will be not visible in the browser when SEO engine will try to search that HTML component. Uh, I'm clear, Yes, sir. Nikhil. Uh, Yes, sir. Yes. ठीक है. तो जैसे रिएक्ट जो होगा ना, तो एसईओ जब करना होगा तो वहां पे रिएक्ट काम नहीं आएगा. तो यहाँ पे अभी तो हम लर्निंग पीरियड में रिएक्ट कर देंगे, लेकिन जैसे तुम और आगे 4 प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट बना लोगे रिएक्ट में, तब आगे शिफ्ट कर जाना फ्रेमवर्क, जैसे नेक्स्ट जेएस में. नेक्स्ट Okay, जेएस sir. जो है रिएक्ट के ऊपर ही बिल्ड हुआ है, राइट? तो नेक्स्ट जेएस एक काइंड का फ्रेमवर्क होगा और वहां पे वो रिएक्ट के ऊपर बना है और वो एसईओ वगैरह में भी काम आएगा. इन केस कोई क्लाइंट है वो बोला कि नहीं, हमारा जो वेबसाइट है वो जैसे कोई गूगल सर्च करे तो शुरू के तीसरे या चौथे पेज में होना चाहिए, सॉरी, थर्ड और फोर्थ नंबर में होना चाहिए. तो वहां पे वो होगा एसईओ क्लिक, Oh, राइट? इट yes, विल sir. बी डन. It will be a role of SEO. How SEO will be maintained. अगर रिएक्ट हम जब बनाएंगे ना तो वहां पे एसईओ डालना बहुत मुश्किल हो जाता है. इतने सारे अलग अलग पैकेज, और वो भी गारंटी नहीं देते हैं कि वो एसईओ करके दे देंगे, राइट? तो
तो ये डिपेंड करता है फ्रंट एंड में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट को क्या चाहिए, राइट। नाउ ओके सर। ये तो हो गया रिएक्ट और नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के ऊपर भी होते हैं एंगुलर Vue.js। या एंगुलर, ये सारी चीजें। तो अभी तो एट द वेरी स्टार्टिंग स्टेज तुम ट्राई करो कि ये रिएक्ट वगैरह ही में काम करो, ठीक है। फिर उसके बाद आगे शिफ्ट करते जाना और एनहेंस करना अपने स्किल्स। फिर अब रिएक्ट के अंदर जब आओगे तो रिएक्ट में काफी सारे टेक्स्ट होंगे, जैसे होंगे तुमको स्टेट मैनेज करना होगा। फॉर एग्जांपल अभी जब स्टेट मैनेज करोगे, स्टेट मैनेज इन द सेंस यू हैव टू ट्रांसफर योर स्टेट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट, राइट। स्टेट मैनेजमेंट तो यही होता है। स्टेट मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम जो स्टेट एक कंपोनेंट में है वो दूसरे कंपोनेंट में हमको डालना भेजना रहता है, तो वो यस सर। स्टेट मैनेजमेंट हो जाएगा। सो वहाँ स्टेट मैनेजमेंट का तुमको पढ़ना पड़ेगा एंड वो सब वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यस सर। उसके लिए अलग अलग टैग आ जाएंगे। रिडक्स फॉर एग्जांपल अगर तुम मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हो तो मोबाइल डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग फ्लटर फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, तो वहाँ पे आ जाएंगे प्रोवाइडर, ब्लॉक, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो ये तो हो जाएंगे स्टेट मैनेजमेंट। लेट मी ट्राई दैट, राइट। माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। तो ये जैसे फ्रंट एंड में आ गए, तो फ्रंट एंड में रिएक्ट, व्यू, ये तो हो गए तुम्हारे लाइब्रेरी। फिर यहाँ पे हो गए ये सारे, ये तीन फ्रेमवर्क हो गया, राइट। तो ओके सर। फिर उसके बाद जब ये हो गया, यहाँ पे तुम कैसे करोगे जावास्क्रिप्ट, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट, ट्राई टू इम्प्लीमेंट टाइप स्क्रिप्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। तुम्हें जावास्क्रिप्ट आता है, मन होते जावास्क्रिप्ट में ही कर देते हैं, वो उस टाइम के लिए तो ठीक रहेगा, बट टाइप स्क्रिप्ट मतलब जब प्रोजेक्ट तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होते गया, तब वहां पे जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। सो एट द स्टार्टिंग ट्राई टू इम्प्लीमेंट टाइप स्क्रिप्ट इन योर प्रोजेक्ट्स, in any project which have ability to read codes from the JavaScript, right? तो ये तो हो गया JavaScript, TypeScript। अब HTML जो है तुम्हारा, HTML पूरा का पूरा हमको नहीं सीखना है, क्योंकि HTML में मोस्ट ऑफ द टाइम HTML में आजकल तुम शायद ही प्रोजेक्ट बनाओगे, तो HTML थोड़ा बहुत सीख लेना। अब यस CSS ओनली जो होगा, हम्म। मेन टैग्स याद होने चाहिए ना, उसके बाद तो सर वो उसमें यूज रिएक्ट में तो सर सिंपल मतलब टैग को यूज करना और आगे बढ़ जाना है। हाँ, मैं समझा नहीं। हाँ सर, एचटीएमएल में सिर्फ टैग्स उतना बस याद रहना चाहिए किस टैग से यूज करना है, इतना नेसेसरी। उसके बाद से उसका नीड नहीं ना है। ठीक है, तो Yeah. या कंटिन्यू। No, this is good. This is actually good. So what he's saying कि तुम्हें ना टेक्नोलॉजी, जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वहां तक पहुंचना जरूरी है, राइट। सो बेटर यू मैनेज कि तुम कितना टाइम तुम्हें बेसिक टेक्नोलॉजी पे देना है और कितना फिर एडवांस लेवल पे जाना है। बट जस्ट बेसिक टेक्नोलॉजी की नॉलेज के बाद यू विल नॉट स्टैंड आउट, राइट। यस सर। तो HTML भी पढ़ना जरूरी है, इज नॉट सेइंग कि बिल्कुल पढ़ना जरूरी नहीं है। यू नीड टू नो कि व्हाट इज div tag, व्हाट इज ऑल अदर टैग्स वी हैव, राइट। यू आल्सो नीड टू नो कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। बट देन उनको एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यू नीड टू नो कि भाई मैं रिएक्ट को डिव मतलब डिव को रिएक्ट में कैसे यूज करूंगा, मैं नेक्स्ट में कैसे यूज करूंगा, मैं कैसे उसमें डेटा डालूंगा, कैसे किसी प्रॉपर्टी को रिएक्ट में यूज करूंगा, राइट, HTML की। सो दैट्स इट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू रीच अप टू देयर टू स्टैंड आउट। ओके सर। थैंक यू Mordhawaj. Can we get back to the slides? या
Jay, can you repeat? Yeah, I was saying, can we get back to the slide? Yeah. Here. The PowerPoint slide, Jay. Okay. Actually, Yeah. Vikas was sharing. Mordhawaj has started sharing the screen. Okay, I can do it again. Hello, Harsh. So the session started some 30 minutes back. We had an introductory session in the beginning. Now we are into question and answer part of it. So Harsh, do you have a question that you want to ask? We have recorded the session for you, so we will make it available to you. हर्ष यू आर म्यूटेड अगर कुछ पूछना है तो एक बार अनम्यूट करके आप बोल सकते हो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्ष सर थोड़ा लेट हो गया सर, थोड़ा बाहर चला गया था इसलिए। कोई बात नहीं हमने ये सेशन रिकॉर्ड किया है तो आपको मैं सर रिकॉर्डिंग गोली मिल गोली मैम से बात जाएगी किया था तो फर्स्ट फर्स्ट टाइम। पार्ट में हमने ओके आपको पूछना है सर मेरे डू को हैव अभी ए आईटी क्वेश्चन दैट आईटी यू के वांट आईटी के क्षेत्र में। टू आस्क हेलो सर, हाँ मैं बोला था मेरे को अभी आईटी के क्षेत्र में उतना नॉलेज नहीं है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल नो सर, ऐप जैसे मैं आईटी अभी कर रहा हूँ, सेकेंड हाँ सेम में हूँ। तो मेरे को ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट जो होता है अच्छा ठीक है उसके बारे में जानना है। हाँ हाँ ओके ओके ठीक है मैं पूरा ना इस स्लाइड में सारा कवर किया था पहले स्टार्टिंग में तो आपको ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती है अगर आपको इंडस्ट्री में स्टार्ट करना है करियर तो एक तो आप पहला कंप्यूटर साइंस का कोई डिग्री होना चाहिए जो कि आपका बीएससी आईटी भी कंप्यूटर साइंस के डिग्री में काउंट होता है हाँ Yes. इसके अलावा आपको एक इंटर्नशिप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको करना चाहिए ड्यूरिंग योर ड्यूरिंग योर एजुकेशन पीरियड ओनली Okay. एंड उसके बाद आती है टेक्निकल स्किल सेट तो इन दो चीज़ों के बारे में हमने अगले स्लाइड में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है आपको टेक्निकल स्किल सेट आपको डेवलप करना पड़ेगा एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा हम रेकमेंड करते हैं आप जावास्क्रिप्ट सीख लो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक बार एक लैंग्वेज सीखा तो सब में काम आता है फ्रंट एंड में बैक एंड में डाटाबेस में हर जगह चलता है तो एक ही लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट सीखो फ्रंट एंड में चलेगा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में HTML CSS और रिएक्ट जेएस सीख लो और Okay. बैकएंड टेक्नोलॉजी में नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस Okay. ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी लाइक एक दिन का काम नहीं है आपको ये सब अगर आप हाँ इट विल टेक मंथ्स अगर आप अभी नेक्स्ट ईयर अगर टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के इंटर्नशिप के लिए तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो जावास्क्रिप्ट HTML CSS रिएक्ट Okay. जेएस नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस मोंगोडीबी ये चीजें अभी से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो ये तो ऊपर के पॉइंट उसके लिए नंबर तो सर वन कहीं टू से। थ्री फोर मैंडेटरी है अच्छा सर, तो उसके लिए सर कहीं से तो हाँ क्लास लेनी पड़ेगी ना। हाँ वो क्लास अभी मतलब हम नहीं प्रोवाइड करते और कोई भी इंडस्ट्री नहीं प्रोवाइड करती कोई कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड करती तो एक तो आप अपने आपके कॉलेज करिकुलम में देख लो कि आपके यूनिवर्सिटी कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है Yeah. नॉर्मली जावास्क्रिप्ट HTML CSS तो कवर्ड हो जाता है वेब टेक्नोलॉजी नाम के कोर्स में पर रिएक्ट जेएस और मोंगोडीबी और ये नोड जेएस ये चीज़ें आपको ऑनलाइन कोर्स खरीद के नहीं तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके उधर कंप्लीट करना पड़ेगा आप अपने समर वेकेशन में ये सब कर सकते हो समर ब्रेक में Yeah. ऑनलाइन कोर्स भी चलेगा अच्छा। ऑल वो स्किल्स आना चाहिए हाँ, ऊपर के 4 स्किल मैंडेटरी हैं इसके अलावा ना अगर आपको और इम्प्रूव करना है तो आप उसके अलावा गिटहब और AWS भी का भी नॉलेज प्राप्त कर लेना ये हो जाने ओके के बाद सर। आपको इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना है इंटर्नशिप के लिए आपको मल्टीपल एक प्रोजेक्ट्स 3 4 जरूर बना लेना
3 हाँ, ओके और सर। अलग अलग टाइप के। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट बना के उन्हें छोड़ मत देना, आप टाइम टू टाइम उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना। जैसे कभी ओके उसमें मैंने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दिया, बाद में चल के मैंने अपने प्रोजेक्ट में छोटा सा चैटबॉट डाल दिया, कोई हेल्प डेस्क डाल दिया। तो छोटी छोटी चीजें अपडेट करते रहना, क्योंकि जब चेंज आपका करते प्रोफाइल कोई देखता है ना, रहिए। रिसेंटली रिसेंटली आपने प्रोजेक्ट को अपडेट किया है। हाँ, उसके अलावा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, गिटहब प्रोफाइल पे डालो, आप अपने टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव करो। उसके अलावा ना जॉब, आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, इंटर्नशिप कहाँ ढूंढोगे? इंटर्नशिप ढूंढने के लिए हमारे पास इंटर्नशिप स्पेसिफिक जॉब साइट्स होते हैं। अभी एक सर internShala.com नाम का एक है जो मेरी नॉलेज में है। वहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप्स के ही वो लिखे ना, हाँ, उसके अलावा आप नॉर्मल naukri.com पे भी अप्लाई कर सकते हो, पर सही जॉब अप्लाई करना। अगर किसी ने कहा है कि मुझे 2 ईयर वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो वहाँ पे मत अप्लाई करना, वो आपका फिर आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करो। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप यूट्यूब पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप अपने सीनियर्स से, आप फिर किसी को आप जो जानते हो जो इंडस्ट्री में, उनसे हेल्प ले सकते हो। हाँ, आप अपना नेटवर्क बिल्ड करो। आप जिनको भी जानते हो जो आईटी इंडस्ट्री में पहले से हैं, जरूर उनके साथ कांटेक्ट रखो, उनसे टिप्स लो, उनसे लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ, और रेगुलर उनसे कुछ ना कुछ टिप्स लेते रहो। उसके अलावा आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल और जॉब रेज्यूमे पे करा, naukri.com पे अपना प्रोफाइल, ये सब अपडेट रखो। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप के लिए। फिर आप अपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, आपके चांसेस बढ़ते हैं इंटर्नशिप में सेलेक्ट होने का, क्योंकि आपके आपके गिटहब प्रोफाइल पे 3-4 प्रोजेक्ट दिखेगा, तो आपको कॉल जरूर आएगी। फिर जो रिक्रूटर है आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। एटलीस्ट फर्स्ट राउंड तो आपका क्लियर हो ही जाएगा इतने के बाद। जो रि- ये- जो आप ये स्ट्रगल कर रहे होगे ना, कि जो रिक्रूटर मतलब आपका रिज्यूमे देखता भी नहीं और रिजेक्ट कर देता है, वो इसलिए करता है क्योंकि आपके रिज्यूमे में ये चीजें नहीं होती है। कोई प्रोजेक्ट का मेंशन नहीं है, कोई गिटहब का लिंक नहीं है। तो रिज्यूमे देखने से कॉल आने, फोन फोन भी नहीं आएगा आपको, वो रिज्यूमे देख के रिजेक्ट कर देंगे। तो एटलीस्ट ये सब चीजें इंप्रूव करो। हाँ, आप अपने प्रोजेक्ट्स का लिंक डालो, गिटहब पे प्रोजेक्ट डालो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपका रिज्यूमे फर्स्ट राउंड में जाएगा टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट निगोशिएबल है, ये 2 चीजें नहीं है। इंटर्नशिप और टेक्निकल स्किल सेट होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स। All right. If there are no more questions, we will conclude this session. I can see Karan is typing a question. I'll wait for him to finish. हरीश, हरीश, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? डॉक्टर सीवी यूनिवर्सिटी। अच्छा, और कोर्स एंड सेमेस्टर? सेकेंड सेम आईटी। सेकेंड सेमेस्टर आईटी। बिफोर आई वाज कंप्लीट डिप्लोमा 3 years in mechanical। मैकेनिकल में क्या किया है, डिप्लोमा? यस सर, उस टाइम अपना और 1 year जॉब भी किया था मारुति सुजुकी में, दिल्ली में। Yes, Karan. Karan's question is that he applied for many internships on internshala.com, but it did not get any call back. So specific, I gave the reasons for it. So if you're not getting a call back because in your resume there are no mention of projects that you have done. Okay. So and also there is no mention of your GitHub profile. तो आप ये 2 चीजें जरूर improve करो। आप अपना प्रोफाइल आप अपने कोडिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन करो कि मैंने ये ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाया है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट बनाया, मैंने ये चैट बॉट बनाया है। आप प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन करो। हाँ, और फिर हर प्रोजेक्ट का गिटहब का लिंक भी वहाँ पे अवेलेबल करो।
फिर आपका रिज्यूमे रिजेक्ट नहीं होगा, कॉल तो जरूर आएगी, इतना तो है, फर्स्ट राउंड आपको मिलेगा चांस। इतना कर लोगे तो अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करो। रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको गिटहब पे प्रोफाइल और कोडिंग प्रोजेक्ट्स करने जरूरी है। ठीक है, ये दो चीज मैंडेटरी है। इसके अलावा आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट रखो और टेक्निकल और अपने रिज्यूमे को अपडेट अप टू डेट रखो। ओके, another question from Karan is what is walk-in interview? So walk-in interview. Another question from Karan is what is a walk-in interview? Walk-in interview is where anyone can go and appear for interview. There is no fixed appointment, and required. So in other way, if it is not a walk-in interview, तो आप directly office में जाके interview नहीं दे सकते हो. You must have to show that I have been called for the interview today, and uh, on basis of that only you get entry and appear for interview. ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर वो वॉक इन इंटरव्यू है तो उसमें कोई भी बंदा ऑफिस में जाके उस दिन इंटरव्यू दे सकता है, उसको पहले से इनविटेशन की जरूरत नहीं है। All right, if you any further questions? All right, thank you guys for joining. This was a good conclusive meeting. Hope that like the information is helpful in building your career. Keep in connect, keep in touch. We when normally in December we post it on our social media pages, so keep an eye there for updates. Um, as Nikhil has said, it is mentioned BE and BTech is requirement. So we will try to next time we will change the word. We will make it like a degree in computer science. That covers everything. And all the best. Prepare yourself. Any help? Feel free to connect on LinkedIn. Send your questions. I'll try to answer at my latest availability. Thank you, everyone. Thank you, sir. Bye. Have a good day.